children, today let's start with chapter number 8, force and pressure. What is force? It is a push or a pull. So force is we perform various activities in every day such as lift a bucket, ride a car, opening or shutting of door, pulling or pushing chair, right? So what is push or pull? It is a force. So in this chapter we will study about different types of force. So force is most commonly used in physical quality. So what are the effects of force? So following force can make a stationary object. जो खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मूव करता, आप धक्का लगाइए तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, राइट? फोर्स कैन चेंज द स्पीड. भाई आप स्पीड है, आप जैसे फोर्स लगाओगे तो तेज जाएगा, ठीक है. अगर आप उसकी स्पीड कम करोगे तो अगर आप देखो आप कोई वुड जैसे साइकिल है वो जैसे जा रही है और दूसरा बंदा उसको पुल कर रहा है तो क्या कर जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सो सिमिलरली व्हेन समवन बॉल इज मूविंग एट अ फास्टर स्पीड, वो स्टॉप हो जाएगी जब आप उसकी स्पीड को मतलब अपना हैंड्स लगा दोगे तो रेस्ट पे आ जाएगी, राइट. नेक्स्ट इज फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन. मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करना. बॉल को बॉल में थ्रो, जो बॉलर था उसने थ्रो करा और बैट्समैन ने उस पर मारा तो दूसरी डायरेक्शन में जाती है. फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज. आप बैलून लीजिए, उसको ऐसे करके प्रेस करिए, उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टू टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, स्पीड को इंक्रीज कर सकती है, शेप को चेंज कर सकती है, डायरेक्शन को चेंज कर सकती है. ये आपको इफेक्ट को याद रखना, राइट. नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. Some forces are directly applied to the body and they cause effects. Such forces are called contact force, जैसे muscular force हो गया, frictional force हो गया, आपका mechanical force हो गया. There are certain other forces which cause their effect without coming in direct contact with object. उसको हम non contact force कर सकते हैं, जैसे आपके gravitational force हो गया, magnetic force हो गया और आपके electrical force हो गया, right? Next is your types of forces. We have first muscular force. So it is a force which is produced by muscles of a living organism. When a bullock pulls a cart, it is using its muscular force. Similarly, when you pull or push something, you are applying your muscular force. Now we have mechanical force, force generated by machine like engine of car, truck, windmills and turbines. Electric force produced with the flow of current, जिसको हम electric force कहते हैं, right? आप कॉम लीजिए, उसमें few bits of paper लिया, आपने हेयर स्पेसेस के रब करिए तो उसको आप देखोगे वो बिट्स ऑफ पेपर जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. नाउ मैग्नेटिक फोर्स का एग्जांपल है, राइट. नाउ एज शोन द अबव एक्टिविटी, जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है कुछ मेटल्स को लाइक आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. ये इनविजिबल फील्ड ऑफ फोर्स के अराउंड वर्क करती है, ये चीजों को अट्रैक्ट करती है. और ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, जो सेपरेट करता है आयरन को फ्रॉम हीप ऑफ गार्बेज एंड अदरवाइज, देखा होगा आपने कि गार्बेज में से इस तरीके से आयरन को सेपरेट करा जाता है, राइट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द मैग्नेट इज इवन इफेक्टिव थ्रू द वुड और ग्लास मीडियम. वी कैन प्रूव इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. आप स्मॉल ऑब्जेक्ट लो आयरन का, उसको टेबल पे रखो, ग्लास टॉप. हाउ द मैग्नेट एंड प्लेस इट अंडर द टॉप ऑफ द टेबल, एग्जैक्टली, ठीक है. यू विल मूव द मैग्नेट, आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगा, उसके साथ मूव करेगा. नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ. इफ वी आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ और द अदर ऑब्जेक्ट आर स्टिल ऑन द अर्थ because of the gravitational pull. जो हमारा weight है, mass है, वो किसकी वजह से due to gravitational pull of earth. So the weight of an object is measure of earth gravitational pull. So we measure the weight of an object. Actually जो weight है आपका gravitational pull का, वो weight को help करता है आपको spring balance करने. Spring balance is a special spring and spring is enclosed in a metal covering and which is open from front. So जो weight है किसी भी object का, वो हम किससे measure करते हैं, earth के gravitational pull on the object. So when the measure of the weight of an object is the actual size of the weight pull on the earth, so जो spring balance है वो हमें help करता है. Spring balance has a special spring enclosed with a metal covering in an open from front. जो spring है वो आपकी metal से attached होती है, एक one end and one still step to the another end. So when a weight of an object, when we weigh the object, the spring gets stretched and indicates weight of an object in gram force, kilogram force according to the capacity of spring balance, right? नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे आपको फंक्शन एक्टिविटी टाइम दिए हुए, हाउ यू विल यूज अ वेट फॉर मेजरिंग बैलेंस, ठीक है. आप एक स्प्रिंग बैलेंस लिए लेना है आपको और उससे आप क्या करना, मेजर करना. नाउ फ्रिक्शनल फोर्स. इफ वी रोल अ बॉल ऑन अ सरफेस, व्हाट हैपेंस इट आफ्टर फ्यू सेकंड, इट्स रोल डाउन स्लोली एंड देन कम टू अ हॉल्ट. वी हैव जस्ट स्टडीड द फोर्स कैन मेक एनी ऑब्जेक्ट
move or stop. This means that some force act on a ball which slows it down first and then bring to rest. This invisible force is called frictional force, right? So the friction between the surface of the earth and ball causes ball to stop. If you observe any smooth surface under magnifying glass, you will see that it has a small grooves or irregularities, small ridges on which you can felt otherwise. Every smooth surface has such ridges on observing under magnifying glass, right? This is how जो friction है वो आपका cause होता है. And when if the surface is rough, अगर surface rough है वो ज़्यादा friction होगा, more friction होगा. अगर smoother है तो less friction. Now static force of the friction which does not allow two bodies to slide on each other. इसको हम force को necessary for sliding. It is the force of friction which is acting between two bodies in contact, right? Rolling friction, it is a force acting on the body when it moves on circular surface. It is caused when the moving circular body causes depression on the surface as it moves. और ये क्या cause करती है? Depression cause करती है जब वो surface के contact में, right? ये आपको यहाँ पे दिया है, आप prove करो rolling friction is lesser than slider friction. So आपको एक wooden block लेना है और एक object लेना है, जैसे टिफिन बॉक्स ले लीजिए. Tie the object with a spring balance and put them on the tabletop or any smooth surface. Place the pencil on the surface and put the tiffin box on the pencil और आप force को apply करोगे, ठीक है? So now you will see that force is applied on the spring bar. As rolling friction is less on sliding friction, वो क्या करेगा? It is easy to drag suitcase with wheels. So all means of transportation have wheels and having ball bearing. Now advantages. It is necessary evil. Without friction, it will be difficult to perform any function. If there is no frictional force, हम walk नहीं कर पाएंगे, right? Brakes on the automobiles only work due to friction. Buses and cars and all other means of transportation, they are available or able to move due to friction. Now harmful effects of friction. What are the harmful effects? First is when anything moves, it needs energy to overcome the force of friction. Due to friction, lot of wear and tear occurs. When the soles of our shoes are worn out due to friction, a type of car, buses we get and they get worn out due to friction. जिससे क्या होता है? harm to machine होता है. जब मशीन हीट होती है तो मेटल क्या करने लगता है? मेल्ट होना स्टार्ट कर जाता है. और जब कूलेंट्स उसमें हम यूज करते हैं, देखा ना, हम कार्स में भी कूलेंट्स का यूज करते हैं, टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है. नाउ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन. आपको अगर फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है तो आप डिफरेंट चीजों का यूज करते हैं. लुब्रिकेशन, यूज ऑफ पाउडर्स, यूजिंग व्हील्स, यूजिंग बॉल. लुब्रिकेंट मतलब आप रफ सरफेस पे लुब्रिकेंट्स का यूज करते हो फ्रिक्शन को रिलीव, जैसे ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट. व्हेन लेयर ऑफ लुब्रिकेटिंग मटेरियल इज अप्लाइड बिटवीन टू सरफेसेस, फ्रिक्शन लुब्रिकेटिंग लेयर में अकर करता है. यूजेस ऑफ पाउडर, मतलब गेम ऑफ क्रेयॉन्स, आप कैरम में आप स्मूदन करने के लिए आप बोर्ड और फ्रिक्शनलेस गेम का यूज करते हैं. यूजिंग व्हील्स, व्हील्स कैन रोल इजीली एंड लेस एनर्जी टू हैंडल. ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर. जैसे आप लगेज, वॉशिंग मशीन एंड दे ऑल आर द मूवेबल हैवी ऑब्जेक्ट. यूजिंग बॉल बियरिंग, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जैसे साइकिल हो गए, कार हो गए. स्मॉल स्टील बॉल्स आर प्लेस्ड इन द मूविंग सरफेस, बिकॉज जो बॉल है मेटल सरफेस से वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है और आप इजिली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं. Streaming the body of the object. So what you can do to avoid friction caused by air and water, objects should be streamlined, giving shape to the body of the object. Like aircraft हो गए, उनकी streamline body होती है जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं? एयर और एयर में मूव कर सकते हैं. Method of increasing friction, आप कैसे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं? So as we have studied earlier, friction is necessary evil. It has certain cases, like in case to increase friction, as in case of shoes. There will be no friction between shoe soles and the roof. To increase friction, आप soles of the shoes have groove on it. जो player और mountaineers हैं वो spikes का use करते हैं. Types of vehicles should have grooves on them, जिससे आप क्या कर सकते हो? उसके टायर्स में friction increase कर सकते हो. Now let's study about pressure. We have already studied that effects a force can produce. So now perform the following. Take a pencil. आप एक pencil लेंगे और sharpen it from one end. And now take a paper. Prick the paper with sharpened pencil. Invert the pencil and again prick the paper. With the end, it was easy to prick the paper. So in other words, end of the pencil required less force to prick. जिससे क्या होता है? Smaller the area of contact, lesser is the force. जितना कम एरिया होगा कॉन्टैक्ट का, उतनी कम क्या होगी? फोर्स.
So object which is conical in shape, conical shaped tiffin box or a ashtray, take some sand and fill a deep tray or box. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका conical part है टिफिन का, ठीक है, on the sand and the place brick on the tiffin, again see the impression. The impression in case of conical end of the object is deeper than the broader end, right? So ये clear हो जाता है कि equal force when applied on the different area of contact show different. इस रिलेशन को क्या कहा जाता है? प्रेशर. तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. सो यूनिट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर, एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, राइट? इट इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर फोर्स इन किलोग्राम, ग्राम. 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1. एसआई यूनिट क्या है? मीटर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर. इसको हम पास्कल भी कहते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर? एआई, ऑल नीडल्स हैव शार्पड एंड पॉइंटेड एंड्स, जिससे आप इजीली प्रिक कर सकते हैं. Pointed ends increase the pressure and force required is lesser. Drawing pins, देखो थोड़ी वो शार्पन होती है, वो क्या करती है? इंक्रीज करती है प्रेशर को और पेनिट्रेट्स इट मिड इजी. स्कायर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं लॉन्ग और फ्लैट स्कल्स. Heavy vehicles are lifted with 6 to 8 vehicles to increase the area of contact and to reduce the pressure on wheels. Heavy tanks have broad chains right around their wheels and wheels do not come directly in contact with them. वो मूव करते हैं इन द चेन्स विद अ ब्रॉड एंड दे कम इन कॉन्टेक्ट विद रोड, रिड्यूसिंग प्रेशर. Animals like camel, they can easily move on sand, but animals like donkey or horse, they find difficult to walk on sand. Now pressure exerted by liquid. Liquid also exert pressures. So like solid, liquid also exert pressure. When we put an inverted cup or bottle bucket full of water, it simply is back come to the surface. ठीक है? What if आप प्रेशर एक्सर्ट करोगे तो वाटर स्टॉप हो जाएगा, right? So the pressure in the liquid increases with increase in their depth. That is why pressure in the deep sea is so great that it can crush the bodies of the human. वो human body को भी crush कर सकते हैं, right? Now atmospheric pressure, which is mainly consist of gases. These gases exert pressure on us, and the pressure exerted by the gases जो आपके atmosphere में present होती है, उसको हम क्या कहते हैं? Atmospheric pressure. Pressure is equal to 100 kiloclaps at sea level. This pressure decreases with decrease in height. Atmosphere also exerts pressure on our bodies, but we do not feel it because oxygen is present in our blood. So the blood is more than the pressure exerted by the atmosphere. That is why atmospheric pressure is maintained by the aeroplanes at normal ground level pressure, because aeroplanes fly at very high altitude. Now you can explain why fountain pen starts leaking when the aeroplane flies at a high altitude, right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.